Good morning students. Now today we will discuss about number pattern, which is also the part of exercise 9.1. Okay, so in number pattern first we will discuss that any number which starts with 1 up to so on is known as natural number, that you all have already learned. Okay, and if any number starts with 0 up to so on, then that number is known as whole number. Okay, so what is we have to learn in the number pattern, that any natural number, okay, like 1 2 3 4 5 up to so on is known as natural number. Okay, 1 2 3 4 5 up to so on is known as natural number. So any natural number if multiply with 2, any natural number if multiply with 2, then that number must be even natural number, then that number must convert to even natural number. Okay, if any natural number multiply with 2, okay, any of the natural number we can consider like 47, 95, 93, 99, any natural number, okay, 1003, 11,026, any natural number. Okay, if we will multiply it with 2, then that number is converted to even natural number. Okay, for example, see here, for example 3721, suppose 3721 is any natural number. If we will multiply it with 2, what we will see, that the number is converted to even natural number. See how 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 1 carry, 2 3s are 6, 1 7, 7442. The result is 7442. So we are saying that at unit place there is 2, then it is a even natural number. Okay, we know that if at the unit place if there is 2, 4, 6, 8 or 0, then that number is even natural number. So this is even natural number. Okay, so this is given in your book. Now second thing is given, that sum of odd natural number. About what it is given? About sum of odd natural number. Okay, if it is asked in your question to sum 1 plus 3 plus 5 plus 7 up to so on, up to n, that means what? We don't know the number, it is beyond your imagination. We don't know the number what is n, it is beyond your imagination. Okay, but what we are observing here, that in this series only odd natural number is adding, and also which type of odd natural number? Consecutive odd natural number. Consecutive odd natural number. Okay, this is what? This is sum of consecutive odd natural number. How do we find? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, हम जानते हैं कि 1 के बाद 3 आता है ऑड की सीरीज़ में, फिर 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, ऐसे ही ऑड की सीरीज़ चला करती है. ऐसे ही अप टू सो ऑन तुम्हें अगर खाली ऑड नंबर को जोड़ने को दे दे तो कैसे हम जोड़ेंगे? तो हम उसके लिए क्या करते हैं, देयर इज़ अ फॉर्मूला. सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? n स्क्वायर. n मीन्स व्हाट? जो लास्ट नंबर लिखा होता है, अगर ऑड की सीरीज़ है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड की सीरीज़ है, तो जो सबसे आखिरी में जो लिखा होता है नंबर n, जो भी लास्ट में होगा, जो भी नंबर होगा, उसका हमें स्क्वायर कर देना है खाली, तो आंसर आ जाएगा. Okay, this is the formula. Suppose
for example 1 plus 3 plus 5 plus 7 up to so on, there is how much? 49. To so on, how much? Up to 49. We have to add odd natural number up to 49. So what we will do? We will apply the formula, and the formula is n square. N means what? N means this number, the last number. Okay, so the last number is 49 into 49. We will square the number 49. See here, what is the result? 49 into 49, 9 9s are 81, 9 4 are 36 plus 6 42 plus 2 44, 4 9s are 36, or 4 is 16 plus 3 19. So 1 6 4 10, 9 1 10 plus 4 14, 1 1 2 2 4 0 1. The answer is 2401. Okay, this will be the answer. If we will sum this odd natural number up to 49, the answer will be 2401. But we can calculate it by applying the formula, which will be very easy. What happened? The formula is n square. N means what? The last number. Okay, we will square the last number, and after squaring the last number, the answer is in your copy. Okay, so this is the number pattern. Okay, now see, we will do 2-3 questions from the exercise 9.1. Okay, now see here. Now all of you open exercise 9.1 and see question number 3. Question number 3 of 9.1 exercise. I am explaining 9.1 exercise 9.1. Okay, so see here, question number 3. Anuradha is drawing a dot rangoli. The question is, Anuradha is drawing a dot rangoli. She has 8 dots in a row. So first we will write what it is given in the question. Number of dots. It is given about number of dots. So we will first write that it is 8 in row. 8 in a row. Okay. Then how many dots will her rangoli have for r rows? So number of rows is given how much in question? Number of rows is given r. Okay, number of rows is given r. How many dots are there if there are 12 rows? Okay, so see here, first we have to make the formula. Number of dots is given in the question, that is 8 in every row. Okay, 8 in every row. Suppose we will have, if 3 row like this, so 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 7 7 7 8 8 8. Like this, a row we will have 8 dots. Okay, 8 dot in one row, 8 dot in another row, 8 dot in another row. So what happens? Number of dots is how much? 8 in a row. Okay, and number of rows is given how much? R. So the formula will be what? Formula is 8 into R. The formula is 8 into R. Okay, formula is 8 into R, where R is the number of rows. Okay, now further it is given in the question, how many dots are there if there are 12 rows. Okay, now number of rows is how much is given in the question? It is given that number of rows is 12. It is further given in the question that number of rows is 12. So we will keep 12 in the place of formula R. Okay, we will keep this 12 in the place of R, which we have made a formula. So the result is 8 into R, 8 into R, that is 8 into 12. So 12 8 the 96 dots. Answer is 96 dots. Okay, समझ में आया? क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं, हर रो में 8-8 डॉट्स बन रहे हैं हर एक रो में. अगर वहाँ पे क्या है 10 रो हैं तो 10 रो में क्या है 8-8 डॉट बने हुए हैं, हमने बनाकर बताया. ठीक है, नंबर ऑफ रोज क्वेश्चन में पहले कितना बता रहा है आर, तो पहले हमें फॉर्मूला बनाना है, तो हम फॉर्मूला बनाएंगे. फॉर्मूला कैसे बनेगा? 8 इंटू आर विल बी द फॉर्मूला. 8 इंटू आर, 8 रो हैं,
मतलब 8 डॉट्स हैं हर रो में, नंबर ऑफ रोज कितने हैं r, तो फॉर्मूला हो जाएगा 8 इंटू आर। नाउ नंबर ऑफ रोज इज हाउ मच 12, नंबर ऑफ रोज क्वेश्चन में फर्दर दिया हुआ है 12 है, सो हम इसी फॉर्मूले में r की जगह रख दें 12 नंबर ऑफ रोज की जगह, क्योंकि नंबर ऑफ रोज ही r है और r की जगह पे क्वेश्चन में दे रखा है 12 नंबर ऑफ रोज, तो हम r की जगह रख देंगे 8 इंटू 12 96 डॉट्स। ओके क्लियर। नाउ सी वन मोर क्वेश्चन वी विल सी। Now we will see question number 6. All of you read question number 6. See, in question number 6, it is written, Harsha scores in mathematics is 15 more than 3/4 of her score in science. Okay, if she scores X marks in science, so how many marks she has scored in science? Marks score in science is how much? This is X. Okay, and number of rows Harsha scored in mathematics 15 more than 3/4 of her score in science. So what happened? Maths score how much? Maths score 3/4 x plus 3/4 x plus 15. 3/4 x plus 15. This is the formula. First we will make the formula. So 3/4 x plus 15. Why? Because in question it is given that Harsha score in mathematics is 15 more than 3/4 of her score in science. So if she score x marks in science, then 3/4 of the x, and we will add 15 on that. So that will be the score of Harsha in maths. Okay, so this is the formula. Okay, this is the question number 6. Okay, now see question number 7. In question number 7, what it is given? Look at the following matchsticks pattern. We will have a pattern. See here. This is the pattern of matchstick is given in the book. Okay, like this only. Okay, this is first figure, this is second figure, this is third figure. What we have to find? We have to find the number of matchsticks is needed. So we are saying that in making one, how many matchstick is required? 3. Okay, 3 matchstick is needed to make one triangle. And here how many matchstick is needed? 1 2 3 4 5. Total how many? 5 matchstick is needed here. And here how many? We will count 1 2 3 4 5 6 7. How many matchstick? Here we are need 7 matchstick. So 3 in one triangle, 5 to make 2 triangle, and 7 to make 3 triangle. So what will be the formula? Formula is 3 plus 2. 5 को हम तोड़ सकते हैं 3 plus 2 में, क्योंकि ये 3 है, इसको 3 ही रहने दो। 5 को हम तोड़ेंगे 3 plus 2 में, और 7 को हम क्या तोड़ सकते हैं? 3 into 2 plus 2. 3 into 2 plus 2 क्या दे देगा? 3 2 is 6 plus 2 7. Okay, so the formula is, what is the formula? Formula is what? Formula is 3n plus 2. Formula is 3n plus 2. Okay, or we can see that the formula is like this only. Formula is like this only. 3 को भी हम तोड़ सकते हैं। देखो सबसे अच्छा एक फॉर्मूला ये है, एक ट्रायंगल बनाने में 3 मैचस्टिक, 2 ट्रायंगल बनाने में 5 मैचस्टिक, 3 ट्रायंगल बनाने में 7 मैचस्टिक्स की जरूरत। सो 3 5 7, दिस इज द कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर वी आर हैविंग ऑन लाइन। सो हियर व्हाट वी कैन राइट? 2 plus 1, 3 को हम 2 plus 1 में तोड़ सकते हैं। 5 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 2 into 2 plus 1, 2 into 2 plus 1 में। 7 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 2 into
3 प्लस 1 में। सो इसको क्या है 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1। सो फॉर्मूला इज वॉट 2 इंटू n प्लस 1। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला टू मेक मैच स्टिक्स। एकदम क्लियर है। एक ट्रायंगल बनाने में 3 मैच स्टिक लग रही है, 2 ट्रायंगल बनाने में 5 मैच स्टिक लग रही है, 3 ट्रायंगल बनाने में 7 मैच स्टिक्स लग रही हैं। हमें ऐसा कोई फॉर्मूला बनाना है जिससे कि हम क्या है आराम से हम सभी जितने भी ट्रायंगल बनने हों उसमें क्या है आराम से हम n की जगह पे वैल्यू रख दें तो हमें नंबर ऑफ मैच स्टिक्स आ जाएं। हमें एक फॉर्मूला बनाना है तो हम कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा तोड़ने के लिए। तो 3 को हम 2, क्योंकि ये 3 फिर 5 फिर 7 क्या है, ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव और नेचुरल नंबर पे की सीरीज़ में जा रहा है। तो हम 3 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 1 जो कि 2 प्लस 1 ही हो जाएगा जो लिखा हुआ था 2 इंटू 1 प्लस 1 में। ठीक है, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। ठीक है, 5 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 जो कि 5 है। 7 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7। सो हमें क्या मिल रहा है कि फॉर्मूला कैसे जा रहा है 2 इंटू n प्लस 1। सो दिस इज द फॉर्मूला। लाइक दिस ओनली वी विल डू rest of the question of this exercise, and if any problem in any of the question you can ask me or can ask me in my comment box. Thank you. Now what you have to do, you have to solve this exercise in your fair copy. Thank you.